So, hey everyone, welcome back to my channel Legalize Hub. I'm Kanak Shukla, and this is the second video of series Law of Tort. In today's video, we are going to cover the topic legal damages. So, yeah, guys, before starting this video, I just want to say one thing. Please do subscribe to my channel so that you will be with me in the whole series of Law of Tort. Also, please press the bell icon so whenever I will upload a new video, you will get a notification of it. So let's start the video. So this is basically the table of contents. These are the topics which I'm going to cover in today's video. First is legal damage, injuria sine damnum, important case related to injuria sine damnum, damnum sine injuria, and also important case related to the damnum sine injuria. Okay, so the first topic is legal damage. What is legal damage? So legal damage in simple words refers to a damage for which you have the remedy. So let's break down both the words. What does the word legal mean? Legal means something for which you have the remedy or something which is legally justifiable or which is correct in the eyes of law. Damage means any actual loss, any injury that is suffered by an individual. So basically, legal damage refers to a damage for which that particular person have remedy. So let's take an example. If a person A infringes the right of person B or commits any tort which infringes the right of person B, so the person B have the remedy according to the law to recover back their right. So basically, that remedy which has been provided by the law to the person for any damage which has been suffered by that particular person because the act of any other individual will refers to as a legal damage. So I hope legal damage is clear. So basically there are two types of legal damage. First is injuria sine damnum and second one is damnum sine injuria. तो एक एक करके दोनों की मीनिंग को समझते हैं. So injuria means injury, sine means without, and damnum means damage. So basically, injuria sine damnum refers to injury without damage. Then, in simple words, when there is infringement of any legal right but without any actual loss, so that will cover under injuria sine damnum. In simple words, let's take an example. If person A commits any tort or wrongful act with person B because of which person B's legal right has been violated, but there is no actual loss suffered by person B. So this will come under injuria sine damnum. In simple words, injury without damage, which means इंजरी तो हुई है, लीगल राइट तो ब्रीच हुई है, बट यहाँ पे कोई भी एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है. बट क्योंकि लीगल राइट ब्रीच हुई है तो पर्सन को कंपनसेशन मिलेगा जिसकी लीगल राइट ब्रीच हुई है. Okay, so let's talk about the second one, that is damnum sine injuria. So this is just opposite. Damnum means damage, sine means without, and injuria means injury, which means damage without injury. So this is just opposite of injuria sine damnum. तो जहां पे डैमेज तो हुआ है बट कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुई है. लाइक इफ पर्सन ए commits any tort or wrongful act with person B, which resulted into the happening of any actual loss to person B, but there is no violation of any legal right of person B, so this will fall under damnum sine injuria. यहाँ पे डैमेज तो हुआ है, उसे एक्चुअल लॉस तो हुआ है, बट बिकॉज इंजरी इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट ये नहीं हुआ है, तो ये कवर होगा अंडर डैमनम साइन इंजूरिया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ एक एक करके हम ब्रॉडली इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया, और एक एक इंपॉर्टेंट केस लॉ को भी डिस्कस करेंगे जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट दोनों का. ओके, इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज. ये मैंने पहले भी डिस्कस करा कि इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स क्या होता है, कोई इंजरी हुई हो बट कोई एक्चुअल लॉस या डैमेज नहीं हुआ. दिस रिफर्स टू एनी इंजरी or violation of legal right without any accompanying actual loss or damage. This basically refers to the violation of legal right but without any actual loss or damage. यहाँ पे किसी की legal right का violation तो हुआ है but because of the violation of any legal right
उसको कोई भी एक्चुअल लॉस या डैमेज नहीं हुआ है. In simple words, this means when a tort committed by the defendant due to which the right of the plaintiff has been violated, but there is no actual loss suffered by the plaintiff. Which means if a tort committed by the defendant due to which the legal right of the plaintiff has been violated, but there is no actual damage or loss suffered by the plaintiff, so this will fall under the category of injuria sine damnum. अब एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. पर्सन ए रिस्ट्रिक्टेड पर्सन बी फ्रॉम अटेंडिंग a meeting of board of directors for passing a certain resolution, but the resolution has been passed during the meeting for whom he was waiting from a long time. So there, although there is no damage suffered by person A by the passing of the resolution, but his legal right to attend any meeting has been violated, for which he will get the compensation, and this is a case of injury without damage. तो यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी. तो पर्सन ए को रिस्ट्रिक्ट करा था पर्सन बी ने एक मीटिंग जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी वो अटेंड करने से, जहां पे एक रेजोल्यूशन पास होने जा रहा था. और जो रेजोल्यूशन पास होने जा रहा था उसके लिए पर्सन ए वेट कर रहा था बहुत ज्यादा टाइम से. बट उस मीटिंग में जिस रेजोल्यूशन के लिए पर्सन ए वेट कर रहा था वो पास हो गया था. तो यहाँ पे डैमेज तो नहीं हुआ क्योंकि जो रेजोल्यूशन के लिए वो वेट कर रहा था वो तो पास हो गया, बट क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट करा गया, उसकी लीगल राइट टू अटेंड एनी मीटिंग ब्रीच करी गई, तो यहाँ पे उसको कंपनसेशन मिलेगा और ये केस बन जाएगा इंजरी विदाउट डैमेज का. सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज सिंपल दैट पर्सन ए हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय पर्सन बी from attending any meeting of board of directors for passing a resolution. For that resolution, person A was waiting from a long time, but in the meeting that resolution has been passed, but person A's right to attend any meeting has been violated, so he will get the compensation, and this is the case of injury without damage. I hope this concept is clear. And the important case law of injuria sine damnum is HB versus White 1703. तो ये एक important case law है इंजूरिया साइन डैमनम का. अब हम इसको डीपली समझेंगे. ओके, तो केस का नेम क्या है? एचबी वर्सेस वाइट 1703. तो केस के फैक्ट्स ये थे, जो एचबी था वो एक प्लेंटिफ था जो कि रेजिडेंट था एल्सबेरी का, और मिस्टर वाइट जो थे वो डिफेंडेंट थे जो कि एक कांस्टेबल थे. तो एक इलेक्शन होने जा रहा था एल्सबेरी में, जिसमें जो प्लेंटिफ था हु वाज अ कॉबलर वेंट फॉर वोटिंग. तो वो क्या कर रहा था, वो वोटिंग के लिए जा रहा था. इन बिटवीन दैट पुलिस कांस्टेबल स्टॉप्ड हिम फ्रॉम वोटिंग दैट, एंड ही गिवन द रीजन दैट he assumed that he was not a settled inhabitant of the state, despite Mr. Ashby being a qualified voter and a legitimate citizen of the country. जो कांस्टेबल था उसने एचबी को रोक दिया क्योंकि उसे ये लगा, क्योंकि एक वो सेटल्ड इनहैबिटेंट नहीं है स्टेट का, इसलिए वो वोटिंग नहीं कर सकता, जबकि जो एचबी था वो एक क्वालिफाइड वोटर था और एक लेजिटिमेट सिटीजन था उस कंट्री का. Although the party to whom plaintiff wanted to give a vote eventually won the election. जिस पार्टी को प्लेंटिफ वोट करना चाहता था वो इलेक्शंस तो जीत गई थी. तो यहाँ पे डैमेज तो नहीं हुआ था क्योंकि वो पार्टी जीत गई, क्योंकि प्लेंटिफ का राइट टू वोट वायलेट हुआ था. तो यहाँ पे डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल. तो यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल होगा. ओके, एक बार फिर से पूरे फैक्ट्स को पढ़ते हैं कि HB, who was a plaintiff, is a resident of Aylesbury, and Mr. White was a defendant who was a constable. An election being conducted in Aylesbury. During elections, plaintiff, who was a cobbler, went for a voting, but the police constable stopped him from voting, stating that plaintiff was not a settled inhabitant of the state, despite of Mr. Ashby being a qualified voter and a legitimate citizen of the country. Although the party to whom plaintiff wanted to give a vote eventually won the elections, no loss was suffered by the plaintiff, but as his right to vote was violated, so he filed a suit against the defendant. क्योंकि उसकी राइट टू वोट जो थी वो वायलेट हो गई थी, इसलिए उसने
केस फाइल कर दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था? द कोर्ट हेल्ड दैट द लीगल मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमनम will apply in this case, which means injury without damage, as there was a violation of legal rights even though there was no physical damages done to the plaintiff. And as per ubi jus ibi remedium, in violation of legal rights, a remedy must be given. तो कोर्ट ने ये बोला था अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमनम, यहाँ पे इंजरी हुई है, उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, इवन दो उसको कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है, और अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम उबी जस्ट इवी रेमीडियम, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी, इस मैक्सिम पे बेस्ड है लॉ ऑफ टॉर्ट कि अगर वॉयलेशन होता है किसी लीगल राइट का तो रेमेडी प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में भी उस पर्सन को रेमेडी प्रोवाइड कराई जाएगी और लीगल मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमनम अप्लाई होगी और ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर द कंपनसेशन। ओके, so let's move forward. I hope this whole concept of injuria sine damnum is clear to you all. I hope all the legalites out there are understanding what I'm trying to teach and what I am trying to explain to you all. I hope I'm using the simple words and I'm explaining in a better manner so that you all can understand what I'm trying to explain. So let's move to the another concept, that is damnum sine injuria. हमने इंजूरिया साइन डैमनम तो पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? डैमनम साइन इंजूरिया। ये मैंने पहले भी बताया, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम। डैमनम साइन इंजूरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी, which means there is an happening of any actual loss but there is no infringement of any legal right. This means to an actual loss suffered by an individual but there is no violation of any legal rights of an individual. मतलब किसी पर्सन ने कोई टॉर्ट या रॉन्गफुल एक्ट कमिट करा किसी दूसरे पर्सन के साथ जिसकी वजह से उसको एक्चुअल लॉस तो हुआ बट उस एक्ट की वजह से उसका लीगल राइट ब्रीच नहीं हुआ. So this will fall under the category of damnum sine injuria. In simple words, when the defendant commit an act due to which plaintiff suffers a loss or damage, but the legal right of the plaintiff has not been violated, so there is no basis of action. Because there is no violation of any legal right of the plaintiff, so there is no basis of action. In law, we only provide remedy to those acts which resulted in the infringement of any legal right. तो यहाँ पे क्योंकि उसे लॉस हुआ बट क्योंकि उसका कोई लीगल राइट नहीं ब्रीच हुआ, so there is no basis of action. When there is no infringement of legal right, then there is no basis of action. यहाँ पे ये सिंपली क्लियरली बोला गया है कि अगर किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है तो वहां पे कोई बेसिस नहीं बनता है एक्शन के लिए. When there is no infringement of any legal right, then there is no basis for action. अब एक एग्जांपल लेते हैं. Person A opens a new shopping mart near his house. Within a month, he started earning a lot of profit from his mart. Suddenly, his neighbor, Person B, opened a new mart just in front of Person A's mart and kept the prices of his goods cheaper than those of his competitor's mart, due to which most of the Person A's customers started buying goods from Person B's mart. And because of this, Person A's profit started falling. So for this, he brings a suit against the Person B, but he cannot do so because there is no violation of any legal rights. So there is no basis for action. So the example is simple कि एक पर्सन ए था जिसने एक मार्ट ओपन करी थी अपने घर के पास और एक ही मंथ में उसका जो प्रॉफिट था वो बहुत ज्यादा हो गया था. बट सडनली क्या होता है, जो उसका नेबर था पर्सन बी, वो भी एक न्यू मार्ट ओपन करता है जस्ट उसकी मार्ट के सामने, और वो जो गुड्स के जो प्राइस थे वो थोड़े कम रखता है एज कंपैरिजन टू पर्सन ए मार्ट, जिसकी वजह से जो पर्सन ए के कस्टमर थे वो कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं? पर्सन बी के पास. अब इसकी वजह से पर्सन ए को बहुत ज्यादा लॉस होता है, उसका प्रॉफिट गिरना स्टार्ट हो जाता है. इस चीज के लिए पर्सन ए जो होता है वो केस करता है पर्सन बी के अगेंस्ट, बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल राइट ब्रीच नहीं है, क्योंकि एवरीवन इज हैविंग अ राइट टू ओपन एनी बिजनेस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. सो देयर इज नो, यहाँ पे क्या उसके बिजनेस ओपन करने से कोई उसका लीगल राइट ब्रीच हो रहा है पर्सन ए का? नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे कोई लीगल राइट ब्रीच नहीं हो रहा है. डजंट मैटर उसको
लॉस हो रहा है क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है, लॉस तो हो रहा है बट उसकी कोई भी वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो बेसिस फॉर एक्शन। तो यहाँ दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है रिलेटेड टू दिस, दैट इज ग्लॉन्चेस्टर ग्रामर स्कूल केस। So the case name is Gloucester Grammar School case. केस के फैक्ट्स ये थे, डिफेंडेंट वाज अ फॉर्मर टीचर एट दिस स्कूल. He decided to resign from his position and establish a new educational institution near his former workplace. This new school, unlike Gloucester Grammar School, had a significantly reduced fee of 12 pence compared to 40 pence charged by the original school. Due to the defendant's previous popularity among students, a considerable number of students opted to leave Gloucester Grammar School and enroll in the new institution. Consequently, this shift in student enrollment led to financial setbacks for Gloucester Grammar School. In response, the plaintiff, the proprietor of this school, initiated the legal proceedings seeking compensation for the financial losses incurred. Plaintiff asserted that defendant's establishment of competing school near his school had adversely impacted his school's financial standing. He was claiming restitution for the damages suffered by him from the defendant. बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट था वो टीचर थे, पहले वो एक टीचर थे किस स्कूल में, ग्लॉन्चेस्टर ग्रामर स्कूल में, बट इन्होंने डिसाइड करा था कि वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देंगे और खुद का एक न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करेंगे अपनी पुरानी ही वर्क प्लेस के जस्ट पास। वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अपना स्कूल जो था वो ओपन करा, बट उन्होंने फीस जो रखी वो 12 पेंस रखी, जबकि उनके फॉर्मर स्कूल जहाँ पे वो टीचर थे वहां पे 40 पेंस थी। इसकी वजह से जो डिफेंडेंट, क्योंकि वहां पे अपने स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो जो स्टूडेंट्स थे वो क्या करने लग गए, शिफ्ट करने लग गए, और क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्ट डिफरेंस था तो वो क्या करने लग गए, अपना ग्लॉन्चेस्टर ग्रामर स्कूल के इसको छोड़ करके इस स्कूल में शिफ्ट करने लग गए और यहाँ पे एडमिशन लेने लग गए, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट इनरोलमेंट में शिफ्ट आया था उसकी वजह से फाइनेंशियल सेटबैक्स हो गए ग्लॉन्चेस्टर ग्रामर स्कूल को। इसके रिस्पॉन्स में प्लेंटिफ ने क्या करा, जो कि प्रोपराइटर था इस स्कूल का, लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी सीकिंग कंपनसेशन फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस इनकर्ड, जो कि उसको फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे उसकी कंपनसेशन लेने के लिए उन्होंने केस फाइल कर दिया। प्लेंटिफ ने ये बोला कि जो डिफेंडेंट का एस्टैब्लिशमेंट था कॉम्पीटिंग स्कूल को लेकर के उनके स्कूल के पास, उसने एडवर्सली इम्पैक्ट करा है उनके स्कूल की फाइनेंशियल स्टैंडिंग को, और वो अब रेस्टिट्यूशन क्लेम कर रहे हैं फॉर द डैमेजेस जो कि उन्होंने सफर करे हैं डिफेंडेंट की वजह से। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, बिकॉज एवरीवन हैव अ राइट टू ओपन एनी न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी बिजनेस, एनी ट्रेड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, सिंपली एक स्कूल ही तो ओपन करा था, उन्होंने कुछ भी ऐसा तो नहीं करा ना जिसकी वजह से उनका लीगल राइट ब्रीच हुआ हो ग्लॉन्चेस्टर ग्रामर स्कूल का। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल डैमेज एंड एक्चुअल लॉस तो हुआ है, बट हमने पहले ही ये चीज पढ़ी है डैमनम साइन इंजूरिया के अकॉर्डिंग, अगर एक्चुअल लॉस हुआ है बट विदाउट एनी लीगल इंजरी, वो जस्टिफिएबल नहीं है। देयर इज नो बेसिस फॉर एक्शन फॉर दीज टाइप ऑफ डैमेजेस और एक्शंस where there is no violation of any legal right, where there is no infringement of any legal right, तो ये जस्टिफिएबल नहीं। अब कोर्ट क्या जजमेंट देता है, द कोर्ट हेल्ड दैट Gloucester Grammar School has no valid case as they suffered damages without any infringement of petitioner's legal rights. The court viewed the situation as a mere business competition between Gloucester Grammar School and the newly established school. Consequently, the act of opening a new school, even with a similar or discounted fee structure, was not considerable an action wrong or an injury to Gloucester Grammar School or its proprietor. Hence, the plaintiff is not entitled to get any compensation from the defendant. So, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि जो ग्लॉन्चेस्टर ग्रामर स्कूल केस है उनके पास कोई भी वैलिड केस नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डैमेज सफर करे और कोई भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पिटिशनर्स लीगल राइट यहाँ पे नहीं हुआ है। और कोर्ट ने ये देखा कि ये जो सिचुएशन है वो एक मेयर बिजनेस कॉम्पिटिशन है बिटवीन टू स्कूल्स, और यहाँ पे एक्ट ऑफ ओपनिंग न्यू स्कूल विथ सिमिलर और डिस्काउंटेड फी स्ट्रक्चर वो एक एक्शनेबल क्लेम के रॉन्ग की तरह कंसीडर नहीं करा जाएगा,
क्योंकि ना ही एक इंजरी की तरीके कंसीडर करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास राइट है किसी भी न्यू इंस्टीट्यूशन को ओपन करने का। तो यहाँ पे plaintiff is not entitled to get any compensation for the defendant. I hope damnum sine injuria concept is clear to you all. एंड या ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज इन दोनों से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और बेसिकली ये जो दो केस लॉज है जो मैंने आपको बताए हैं दोनों का, इंजूरिया साइन डैमनम में एचबी वर्सेस वाइट एंड डैमनम साइन इंजूरिया में ग्लॉन्चेस्टर ग्रामर केस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है। बिकॉज जब हम आंसर राइटिंग करते हैं अपने एग्जामिनेशन में तो हमें केसेस को मेंशन करना पड़ता है। मैंने अपने जो एग्जाम्स हुए थे उसमें हमें तो बोला गया था, हमारे मेंटर्स ने हमें तो बोला था कि हमें हर टॉपिक, अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्ट लीगल डैमेज, तो हमें व्हाट इज लीगल डैमेज, टाइप्स ऑफ लीगल डैमेज, इसी वे में हमें आंसर राइटिंग करनी है। और जितना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करा आप इतना लिखोगे तो सफिशिएंट है। आपको खुद से एड ऑन करना है तो वो आपकी विश है, बट इतना सफिशिएंट रहता है। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज लीगल डैमेज, टाइप्स ऑफ लीगल डैमेज, उसके बाद दोनों को डिफाइन करना है और दोनों के पर्टिकुलर केसेस को मेंशन करना है विद केस फैक्ट्स एंड जजमेंट। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने ये लिख रखा है ना, तो इसी तरह हमें लिखना होता है। पहले केस लॉ लिखना होता है, फिर उसके बाद केस फैक्ट्स लिखने होते हैं, फिर कोर्ट जजमेंट लिखना होता है। So that's all for today. I hope the concept legal damage is clear to you all. So yeah, thanks for watching and please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and please also press the bell icon. I hope all the legalites out there are liking my videos, and there are so many upcoming videos which I'm going to upload. I'm going to cover each and every topic of law of tort in a particular video. Please do subscribe to my channel so whenever I will upload a new video, you will get a notification of it. And please be with me in the whole series of Law of Tort. And please keep supporting and keep loving. And thanks for watching.